passage 3, Makete integrated rural transport project. किस मामले च पढ़न जा रहे हैं? रूरल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट किस तरीके दे नाल लैके आया गया ते किस तरीके दे नाल उसने उन्हां दा फायदा कीता. Kind of the question answers we are having. Reading passage 3 has a 6 sections, A to F, list of headings ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. For A paragraph they have already done. Request for improved transport in Makete. Its meaning is clear कि उत्थे transport वधिया नहीं होगी पहला ते उन्होंने request की थी. Starting वाला paragraph. Understanding passage किधर नूं जाण वाला. बल्कि पहला मैं लिखूंगा कि माड़ियां conditions उस जगह दे उत्ते roads जेड़े सी अच्छे नहीं सी, connectivity अच्छी नहीं सी, तो लास्ट दे विच वो request for improved transport in Makete. Section D, the heading दसी गई सी 9th one. Effects of initial MIRTP measures. उन्हां दे की effect सामने आए. चलो देखते हैं. A paragraph की heading की हुई है. Question number 31 says MIRTP was divided into 5 phases. 5 phases to divide किया हुआ है. Prior to the start of the MIRTP, the Makete district was almost inaccessible during the rainy seasons. चलो देखते हैं. Question number 36. Construction of footbridge, steps and handrails. ये तो याद रख लेंगे. जिस जगह ते आऊगा आप उस जगह ते देखेंगे कि इस जगह ते बारे गल कर रहा है. 3 वर्ड या मिल जाना चाहिए. Footbridge, steps and handrails. B paragraph देखना चाहूँगा. First line देख लेना वैसे section A दी. The disappointing results of many conventional road transport projects in Africa led some experts to rethink the strategy by which the rural transport problems were to be tackled at the beginning of the 1980s. A request for helping in improving the availability heading the mamlech of transport within the remote Makete district of the southwestern Tanzania presented the opportunity. Last wali line ch likh raha si MIRTP started in 1985 with the financial support kitthon mili from the Swiss Development Corporation and was coordinated with the help of the Tanzanian governments. Section B. When the project began, Makete district was virtually totally isolated during the rainy season. And this is the first line. Always very important. Question number 32nd. Almost यही लिखा हुआ है ऐसे आप पढ़िया. District was almost inaccessible during the rainy season. Yes, बिल्कुल सही. 32nd answer is yes. Regional roads was in such a bad shape that access to the main towns was impossible. 3 महीने तक कहंदा कट्टे रहंदा सी एक तरीके दे नाल. Road traffic extremely rare सी within the district and alternative means of transport जेड़े सी वो कहदे नाल लोकी जा रहे सी to the donkeys. In the north of the district, people relied primarily on the paths जेड़ी कि slippery हुंदियां सी and dangerous during the rains, obviously. Before solution could be proposed, the problem had to be understood. ये तो दस दिता गया कि मींह पैंदा सी ते 3 महीने उत्थे पहुंचे नहीं जा सकदा सी. ट्रांसपोर्ट है नहीं सी ते लोकी गधेआं दी वरतों करके शायद उह चीज़ां नूं एक जगह तो दूसरी जगह ते ट्रांसपोर्ट करने लई काम कर रहे सी. तो लिखा कि सोल्यूशन आप यकदम सोल्यूशन थोड़ी किसी चीज़ का कर सकते. पहले अंडरस्टूड तो किया जाए कि प्रॉब्लम की आ कि उत्थे रोड्स बन सकदियां आ, लोगों को इन्ना पैसा है कि वो कार बाय कर सकते हैं, राइट, कि आप कंस्ट्रक्शन इदां दी चीज़ां दी करिए या नहीं कर सकते. वो भी अंडरस्टैंडिंग पार्ट च जाना चाहिए सी. कहंदा बिफोर सोल्यूशन कुड बी प्रपोज्ड the problem had to be understood. Little was known about the transport demands of the rural households. Phase 1, एक क्वेश्चन कीता सी अपने को सी 31st उन्हें कहा 5 phases. Phase 1 अपने को लिखा, देखेंगे 5 phases टोटल मिलते हैं या नहीं मिलते. December 1987 focus on the socio-economic survey कीता गया. More than 400 लोगों का लेवल भी तो चेक करांगे ना, लोग की कर सकते हैं, की अडॉप्ट कर सकते हैं. कहना पहला की फेस का रिसर्च की गई, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मोर देन 400 हाउस होल्ड्स
district that indicated that a household in a Makete spent, मतलब की गल अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं पहली लाइन ਨੂੰ ही आप पता तो करिए कि प्रॉब्लम की है कहता लगभग 7 घंटे एक दिन दे transporting themselves and their goods, figure which seems extreme but which has also been obtained in surveys in other rural areas. लगदी है पर बाकी जगह ते भी फिगर्स हैगी in Africa. Interesting fact regarding the transport were found 95% transport on foot, 80% was within the locality, and 70% was related to the collection of the water and firewood and travelling to the grinding mills. किहदी गल सी अंडरस्टैंड किया जाए असल च प्रॉब्लम की आ, हैडिंग्स चैक की जान, आइडेंटिफाइंग द मेन ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स. Second is the heading for your question number 27th one. Question number 33rd is जगह phase 1 दिख जांदा. Phase 1 of MIRTP consisted of a survey of household expenditure on transport. की करदा किन्ना खर्चा ट्रांसपोर्ट ते हुंदा है, नहीं वो इस मामले च ये नहीं सिगे, राइट. Spent on average 7 hours a day of transporting themselves and their goods. वो दूसरी साइड ते आ. Answer is no for question number 33rd ते, right. गल ही ट्रांसपोर्ट ते ना कि एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट. किद्दां हो रहा है ट्रांसपोर्ट गुड्स दा, किस मामले ते करदे आ, उन्हें फिर लिखिया सी उन्हां ते पहुंचना किद्दां आ, राइट. लोकैलिटी दे अंदर कलैक्शन ऑफ वाटर ये खर्चा नहीं है, कलैक्शन ऑफ वाटर पानी लैन जाते हैं, फायरवुड लैन जाते हैं, राइट. ग्राइंडिंग वास्ते जाते हैं मिल्स दे विच, ऑबवियसली हो सकता अपने भी दाने जां अपनी क्रॉप्स जिहड़ियां आ वो लैके जाते होंगे. 34th सर्वे कंक्लूडेड दैट 1/5 20% हमेशा कहना होंगे जिथे 20 हो तो उल्टा दिमाग च रख लेना चाहिए. तो उल्टा मीनिंग इज 100 - 20. Survey concluded that B% of the household transport requirement as outside the local area. ध्यान अंडरस्टैंड करना चाहिए. 20% of the household transport requirement as outside the local area. And क्वेश्चन ने बड़ा क्लीयरली लिखा पैसेज दे विच 80% was within the locality. ਇਹਦਾ मतलब 20% उस तो बाद. क्लीयर कट आंसर फॉर योर 34th one is yes. हमेशा उल्टे नूं लैके चलना, बहुत बार ये तुहानूं सिखा चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 35th MIRTP hope to improve the movement of goods from Makete district to the country's capital. Improve कर सकणगे improvement of goods दी from this to this. Section C आ गया अपने. फेज 1 उत्ते आ गया सी, फेज 2 देख रहे अगले पैराग्राफ च. हुण उन्हें डिटरमिन कर लिया कि ट्रांसपोर्ट नीड्स चाहिए आ, क्यों चाहिए वो भी दसदा. बेचारे 95% तो ऑन फुट ही चल रहे सी, राइट. पॉसिबल सोल्यूशंस वर आइडेंटिफाइड, हुण हल लभे गए विच माइट रिड्यूस द टाइम एंड बर्डन. टाइम भी बचावे, जेडे 7 घंटे लग रहे सी वो भी थल्ले आवे, ते बर्डन कितना आ वो भी. ड्यूरिंग द फेज 2 फ्रॉम जनवरी टू फैब्रुअरी 1991 number of approaches were implemented in an effort to improve the mobility and the access to the transport. A number of approaches were implemented. An improvement of the road network. पहला की कंसिडर किया गया कि आप रोड नेटवर्क ਨੂੰ improve कर दिए, was considered necessary to ensure the import and export of the goods to the district. ਤਾਂ जो इंश्योर हो जाए कि ਜਿਹੜਾ goods ਆ district ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. These improvements were carried out using a methods that were heavily dependent on labor. In addition to this improvement of roads, these methods provided training in the operation of a mechanical workshop and bus and truck services. Obviously, ये भी चाहिए अपन ਨੂੰ. However, the difference from the conventional approach was that this time consideration was given to local transport needs outside the road network. लोकल ट्रांसपोर्ट नीड्स की आ. पिछे एक जगह ते आपां पढ़िया सी डोंकीज़ नूं वरतदे सीगे चीज़ां नूं लैके आउण जाण लई, ते आपां जे उत्थे बस ते ट्रक ला देवांगे तो शायद फिजिबल ही नहीं होगा. मोस्ट गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग द पास. वो किद्दां गुड्स कहंदा प्रोवाइड कीते जांदे सी, कहंदा अलॉन्ग द पाथ. ऑबवियसली पहाड़ां ते कहंदा जी शॉर्टकट बने हुंदे आ, आपां भी कई वारी जाए ते दिख जांदे हुंदे पगडंडियां जिन्हां नूं आपां कहंदे आ,
shortcuts up and down the hillside. The paths were a real safety risk. Obviously पहाड़ां दे उत्ते जे तुसीं समान लेके जाना आ ते safety risk हो गया, and made the journey on foot even more hard to climb arduous. It made sense to improve the paths by building steps, handrails and footbridge. ये 3 word मैनूं याद आ, क्वेश्चन सी अपने कोल एक जगह ते, उस गल दा ख्याल रखांगे. क्वेश्चन नंबर 36 1, राइट, उस जगह ते भी ये वर्ड लिखा सी. बिफोर दैट पर्टिकुलर वन, इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ हेडिंग्स, मैं किस मामले की गल कर रहा, क्वेश्चन नंबर 28 दे विच चेक किया जाण. इनिशियल इंप्रूवमेंट्स इन मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट मोड्स. बस ट्रक की गल हुई, रोड की इंप्रूवमेंट की गल हुई, तो उन्होंने ख्याल रखा जाए. 5th इज द हेडिंग फॉर योर सेक्शन सी. 36 क्वेश्चन लिखा गया वर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटब्रिज, स्टेप्स एंड हैंड रेल्स. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਹਾਰਡ ਟੂ ਕਲਾਈਮ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹੇਅਰ. ਆਪਸ਼ਨ improved paths used for transport up and down hillsides. D is the answer for your question number 36th one. Construction बनानी सी तां जो की होवे, improve हो सकन path केदे वास्ते, transport करनी आ up and down the hill. This is what, right, उन्होंने clearly लिखा. And made the journey on foot even more arduous. Obviously hard to climb क्या सी, difficult क्या लिया जावे. Sense to improve the path by building this. Section D. Second phase हाले भी देख रहे हैं मेरे को, पर in between मेरे को आंसर 35th का नहीं आया. Answer for your question number 35th is not given. Section D. End of the phase 2. It was clear that the selected approaches to the Makete transport problems had different degrees of success. Phase 3 आ गया. From March 1991 to March 1993, focus on the refinement and institutionalization of these activities. ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ institutionalization ਕਰ ਰਿਹਾ. ਕਹਿੰਦਾ road improvements and accompanying maintenance systems had helped make the district center accessible throughout the year. ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, road improvements ਹੋ ਗਏ ਤੇ possible ਹੋ ਗਿਆ assess ਕਰਨਾ throughout the year. Essential goods from outside the district had become more readily available. Obviously ਜਿਹੜੇ goods ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ available ਹੋ ਗਏ at the market, and price ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ fluctuate ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ pass and secondary roads were improved only at the request of the communities. ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ, who were willing to participate. ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. Participate in construction and maintenance. However, the improved paths, the inhabitants and request for the assistance greatly increased. Soon after, only a few improvements had been completed. Question numbers check कर लेना चाहना 37, 38 and 39. Frequent breakdown of buses and trucks in Makete. Buses ਤੇ trucks ਦਾ breakdown ਹਾਲੇ word ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ. Improvement of secondary roads and paths, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ districts ਜਿਹੜੇ ਆ accessible ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, goods ਦੀ movement ਜਿਹੜੀ ਆ throughout years ਹੋ ਗਈ ਸੀ, food prices ਵੀ fluctuate ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ. Isolation of Makete for part of the year. देखते हैं एक मिनट, मैं breakdown भी देखना चाहूँगा. Efforts to improve the efficiency of the existing transport services were not successful. क्यों? Because of the motorized vehicles in the district broke down ਅਤੇ ਕੋਈ resource नहीं सी ਉਹਨੂੰ repair ਕਰਨ ਵਾਲਾ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਸਾਰੇ answers clear ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ. ਪਹਿਲਾਂ 37th, efficiency of the existing transport service were not very successful. क्यों?
क्योंकि ज़्यादातर मोटराइज्ड व्हीकल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ब्रोक डाउन ਅਤੇ कोई रिसोर्स नहीं सी उसनू रिपेयर करन वाला। फ्रीकुएंट ब्रेकडाउन ऑफ बसेस एंड ट्रक्स इन मैकेटी उन्हें की कीता, उसने रोकियां, hindered attempts to make the existing transport services more efficient, क्योंकि रस्ते जो रिपेयर इंपैक्ट लभना सी तुसी उस जगह ते। I is the answer for your question number 37th one. हुण उसने लिखा सी 38th, improvement of secondary roads and paths. इस ऊपर वाले पैराग्राफ लिखा सी paths and secondary roads were improved. किद्दां जे लोकी कहणगे कि असीं हैगे हैं जी, असीं तुहाडी हेल्प करन नूं मतलब कि कोऑपरेट करन, राइट? ऑप्शन is the G option, was done only at the request of the local people ਜਿਹੜੇ कि ready ਆ help ਲਈ, who were willing to lend a hand. It meaning is obviously cooperate करना कि ਅਸੀਂ भी नाल काम करते हैं जी, तुसी कराओ जी ये काम. That is the answer. G is the answer. 39th question, isolation of a Makete for part of the year ਹੁਣ ਇਹ प्रॉब्लम नहीं रही सी, उसने लिख दिता गया सी कि मूवमेंट होनी शुरू हो गई सी. ऑप्शन इज द ई ऑप्शन, was no longer a problem ਜਦੋਂ रोड बन चुका सी. once the road had been improved. E is the answer for your question number 39th one. Total phase आए 10. Question number 31st कह रहा सी MIRTP was divided into the 5 phases. इस तो बाद 4th and 5th phase नहीं है. It's a 3 phase only, not the 5 phase. Answer is a no for your question number 31st. And इसनू अंडरस्टैंडिंग च लैके कढ़ना पैना सी, ना कि डायरैक्ट आप लिख देंगे, राइट? क्योंकि सारे फेजेस देखेंगे किन्ने सी, इस तो ये नहीं कि ए पैराग्राफ च चेक करके आप उसनू नॉट गिवन लिख देंगे. क्वेश्चन नंबर 40th, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट डिस्क्राइब द मेन एम ऑफ द रीडिंग पैसेज. पहला प्रॉब्लम सी, फिर प्रॉब्लम्स नू आइडेंटिफाई किया गया, फिर सोल्यूशन लभे तो उन्हों का की इंपैक्ट होया, किस तरीके दे नाल लोकां दी लाइफ बेटर हो गई. ये आप पढ़ रहे सगे ए बी सी ते डी वाले पैराग्राफ दे विच, मामले दे विच भी, राइट? Option that comes out to be for your question number 40th is a B option, to describe how MIRTP was implemented and how successful it was. B answer for your question number 40th. Now we need answer of question number 29 and 30th. E paragraph, छोटा जा paragraph है, गलती नहीं होनी चाहिए in terms of headings. Can it would have been easy to criticize the MIRTP for using in the early phases a top down approach, right? कि ऊपरों आप फार्मूला ड्राइव करो तो थले वाले जेड़े उस तरीके ना काम करन, in which the decisions were made by the experts and officials before being handed down. This is a top down legislation भी कई बारी आप कहते हैं. But it was necessary to start the process from the level of the government authorities of the district. It would have been difficult to respond to the request of the villagers and other rural inhabitants without the support and understanding of the district authorities. Heading, that is the cooperation of district officials. 10th is the heading for your question number 29th. And section F, गल करते सी, the concept of integrated rural transport is now well established. In Tanzania, where a major program, rural transport, is just about to start, the experiences from the Makete will help in this initiative, and Makete district will act as a what? Reference. किस दे लई? For future work. कि किद्दां उस जगह जेड़ी कि पहला develop नहीं सी, फिर किस तरीके नाल develop होई. And that is a what? First is the heading, MIRTP as a future model. First is the heading. And this is all about your reading passage 3